let us start problems on trains. See, when we Yes. come across problems on trains, we have studied these four scenarios that a train crossing a stationary object. A train is crossing a stationary object like a pole or standing man. You have to be very specific, standing man. Okay, which can be considered as a point object. Means length of these objects cannot be compared with the length of the train. So these are considered as a point object. So this is a point. So you cannot compare the length of point and length of train. Now, second, the train is crossing stationary object of the given length, like platform, bridge, and tunnel. So these are the objects जिसका length और platform का length हम compare कर सकते हैं. We can compare the length of platform with the length of train. We can compare the length of bridge with the length of train, and same with the tunnel. Now, two trains are moving in opposite direction and two trains are moving in same direction. Now, these are the four situations we have to study in case of problems on trains. Okay, now let us try to understand ये हर एक situation में हम क्या क्या use करने वाले हैं. Okay, now in the first case that when train time taken, always keep this in mind, time taken by the train of length L meters to pass the signal post, okay, or a standing man, then the time taken will be of L meters. So time taken will be the L meters. So what they are saying is, suppose if length train is passing the pole, standing man, okay, that means a point object. We are considering them as a point object. We are not considering there is length. So in that case, the time is always, see, what is the formula for time? Basically, formula for time is distance upon Speed. speed. This is the formula for finding the time. But here we are considering this distance as a L, which is the length of a train, which is the length of a train. Now ये scenario कैसे होता है? How this happens? Now look at this particular situation से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. Okay, just a minute. Okay. Now look at this. यहाँ पे what happened here? This is a train. This is a train whose length is L1. Let us say L length, and this passing this pole. This is a point object, and when it will pass completely this pole, so what is the total length between B and C? So B and C may you can see only length of a train, because the length of a pole is too small. So always keep this in mind when the train is passing to such objects like pole, standing man. Standing, specifically standing man मैं ये क्यों कह रहा हूँ? Because we are considering here stationary objects. We are considering the stationary objects here. Yes or no? So keep this in mind. The time will be equal to L upon speed. Now अगर आपका length अगर मीटर में है, तो आपका स्पीड मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए. फिर से किलोमीटर पर में अगर दिया हुआ है, to convert this speed from kilometers per hour to meter per second, day before yesterday we have seen we have to use this conversion factor 5 by 18. Okay, this is the basic that we have to remember. Now the next case will be the time taken by train L1 meters to pass a stationary object. To pass a stationary object, okay, to pass a stationary object, that is L2, that might be platform, bridge और tunnel, ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों की लेंथ कंपेयर हो सकती है. Then the time is basically time to cover this distance L1 plus L2. That's why here we are taking the time formula as L1 plus L2 divided by 2. What is this L1? This is the length of a train. This is the length of train.
And what is this L2? This L2 will be the length of other stationary object. Length of other stationary object जो platform, bridge और tunnel में से कोई भी हो सकता है. I hope you are getting this what I'm saying. Yes, sir. Okay. Now इसको diagram के form में अगर हमें देखना है, if I want to show this diagrammatically, then you can see that here there is a train. Okay, now this train of length L1 started to cross this platform which is of length L2. So this is the time started. This is the point of starting to cross this platform. And when the train will completely pass this platform, this will be the situation. So this is the total distance traveled by train while passing this platform. Now what we can see in this total distance, there is L1 and L2. So always keep this in mind. When train is passing to such objects which have a considerable length, then the total distance traveled by train will be equal to length of a train plus length of other objects. That's why we are finding the time as L1 plus L2, L1 plus L2 divided by speed. अगेन आपके दोनों लेंथ अगर मीटर में है तो आपका स्पीड मीटर पर सेकेंड में रहेगा, अगर नहीं है तो आपको कन्वर्जेंस रिस्पेक्टिवली करने पड़ेंगे. नाउ you can interchange this particular formula. Can I say speed is equal to L1 plus L2 divided by time in this case? Yes or no, Tanvi? Yes, sir. Guru? No. So what I can do, I will just rearrange this. कभी कभी हो सकता है कि शायद L1 L2 में से कोई भी एक फैक्टर दिया हुआ है, आपको स्पीड और टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है. सो कैन आई से L1 प्लस L2 विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो ये दो ऑब्जेक्ट्स, दो पहले केसेस ऐसे जिसमें आपको ऑब्जर्व करना है कि ट्रेन किस ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है. अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूला विल बी डिसाइडेड. ओके, नाउ let us go to the next part that we have studied yesterday. Concept of relative speed. Concept of relative speed याद आ रहा है आपको? concept of relative speed देखा था हमने. Yes, sir. Concept of relative speed. What is the concept of relative speed? When two moving objects are moving in opposite direction and two moving objects are moving in same direction, that is the concept of relative speed. That is the concept of relative speed. The concept of relative speed says that now when the two objects are moving in opposite direction, then their relative speed is always equal to sum of their respective speeds. So look at this. These cars are moving towards each other. So they are moving in opposite direction. So their relative speed will be x plus y. X is the speed of this blue car and y is the speed of this red car. Then the relative speed will be x plus y. But if they are moving in the same direction, look at this arrow position. They are moving in the same direction. This blue car is following this red car. In that case, relative speed will be the subtraction of their respective speed. This concept is very important because when we are solving the questions on trains, two trains moving in the same direction and two trains moving in a अपोजिट डायरेक्शन, ये वाला जब हम लेंगे तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन क्रॉस कर रही है तो दोनों का एडिशन होगा, सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है तो दोनों का क्या होगा? सब्ट्रैक्शन. Okay, now let us try to solve the questions on this. Definitely means in all type of competitive exam, questions on this particular topic ask. Okay, और ये एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है. Now look at this first question. Okay, I will explain some of the question first and then I will give you some time to solve. A 240-meter long train crosses a pole in 70 seconds. What is the speed of a train? Now, which object train is passing? Train is passing to pole. Okay, when train is passing to pole, तो speed आपका क्या हो जाएगा? Speed is equal to simply L upon time. What is L? L is nothing but length of a train. Now, what is the length of train given here? Length of train is 240 meters and time is given in second, that is 70 seconds. तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है. जब आपका लेंथ मीटर में होता है तो टाइम सेकेंड्स में ही होना चाहिए. सिंप्लीफाई करो, 7 6 42, so 6 meter per second. If you look at all the options are also in meter per second, but 6 meter per second is not given. So your answer will be
None of these. I hope you understood this. Tanvi, Guru, have you understood this? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Now let us try to solve the next question. Next question करने की कोशिश करते हैं. Okay. Now देखो, मैंने पहले ही बोल के रखा है आपको, स्पीड का जो फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये फॉर्मूले को रीअरेंज करके और दो फॉर्मूलेज हमें मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें इसमें यूज करना होता है. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. Distance is equal to speed into time. Okay, speed into time. So any one formula we have to use. Now what we have to find? We have to find the speed of a train. तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सोचो, ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है? 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ. Read this word very carefully. Now tell me, what should be the length of a platform? Length of a platform must be 480 meters. 480 meters must be the length of a platform. And how many minutes it is covering? 2 minutes. So आपका formula कौन सा आएगा? So your speed formula will be, train is passing platform here, so it will be L1 plus L2 divided by time. What is L1? That is the speed, that is the length of a train. Length of train is 240. And what is the length of platform? Which is the twice of the length of a train, that is 480. Now this both are in meter, so the time should be in seconds. So 2 minutes is nothing but 120 seconds. So take 120 seconds so that your speed will be in meter per second. So just figure out this, simplify करो, ये 720 हो जाएगा. 720 divided by 120, that many meter per second. और simplify करते हो तो आपका 6 meter per second आंसर आएगा. If it is given in option, yes, it is given in option, which is option C. देखो कितना सिंपल तरीके से हम ये कर सकते हैं, स्टेप्स भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए? इफ यू शुड बी गुड एट कंसेप्ट. कंसेप्ट अगर पता है, ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है? ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है. तो आपको प्लेटफॉर्म का लेंथ भी पता होना जरूरी था, जो इनडायरेक्टली दिया था. देखो शायद आप कैनॉट बी डिटरमाइंड की तरफ जा सकते हो, क्या आप बोल सकते हो कि सर प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया नहीं है, बट इट इज इनडायरेक्टली गिवन इज द ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ. Yes or no? Twice of Yes, its sir. Yes, sir. directly given. So reading the question is again very important when you are solving the question. तो question को ठीक से पढ़ना ये भी एक हमारा बहुत important task होता है, my dear friends. So always read the questions very carefully. Now I'm giving you some time for this. Try to solve this question. A train 120 meter long takes 6 seconds to pass a telegraphic post. फिर से टेलीग्राफिक पोस्ट और लेंथ ऑफ ट्रेन का कंपैरिजन नहीं हो सकता. आपको स्पीड ऑफ अ ट्रेन निकालने के लिए बोला है. इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, ऑल द ऑप्शंस आर गिवन इन किलोमीटर्स पर आवर. तो जो भी मीटर पर सेकेंड में आपका जो स्पीड निकलेगा, आपको उसको किलोमीटर्स पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. वेरी गुड क्वेश्चन. नाउ ट्रेन इज पासिंग अ टेलीग्राफिक पोस्ट. नाउ ट्रेन इज पासिंग द टेलीग्राफिक पोस्ट, आपको सबको पता है, इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं. We consider this as a point, and we cannot compare the length of a point and a length of a train. Come on. Now, yes. So what will be the speed here? Speed will be simply, last case में हमने L1 plus L2 लिया था, यहाँ पे सिर्फ L upon time आ जाएगा, my dear friends. Okay, what is the L? That is 120 meters. And what is time? Time is given in seconds. तो इनका तो सीधा सीधा division हो जाएगा. That is 20 meter per second. But your all options are given in kilometers per hour. So always keep this in mind. If you want to convert meter per second into kilometers per hour, your conversion factor is 18 by 5. 18 by 5 से मल्टीप्लाई कर दो और सिंप्लीफाई करने के बाद आपका पूरा आंसर आ जाएगा 72 किलोमीटर्स पर आवर, विच इज ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. आई होप यू पीपल आर गेटिंग दिस. बहुत ही अच्छी तरीके से हम ये कर सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ओके
Chalo, now let us go to the next question. Let us go to the next question. I hope you people are enjoying this. Yes, sir. Yes, sir. ओके नाउ थोड़ा सा अभी यहाँ पे चेंज मैंने किया हुआ है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल डेफिनेटली यहाँ पे बढ़ाया है। देखो हम साथ में करते क्या है, दिया है देखो। अ ट्रेन विच इज 150 मीटर लॉन्ग passes a pole in 15 seconds. So can I find out the speed of a train from this statement only? Yes, I can, because train is passing a pole. So what is the speed of a train? Speed of train हम निकाल लेते हैं। passing pole जब होता है तो simply L upon time होता है, that is length of train upon time. So length of train is 150 divided by 15, तो 10 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड हो गया। वेरी गुड। नाउ क्रॉसेस अनदर ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, इन हाउ मेनी सेकेंड्स? 8 सेकेंड्स। मींस देखो क्या हो रहा है, ये ट्रेन यहां से जा रही है, इसका भी लेंथ L1 कितना है? 150 मीटर्स है, 150 मीटर्स है, और इसका स्पीड हमने निकाला S1 निकाला इसका 10 मीटर पर सेकेंड, और crosses another train in a same of the same length in opposite direction. Now opposite direction से एक ट्रेन आ रहा था जिसका भी लेंथ L2 भी कितना है? 150 मीटर्स है। ओके, नाउ इसका स्पीड हमें पता नहीं है, स्पीड हमें पता नहीं है, बट कितने टाइम में क्रॉस किया? टाइम टू क्रॉस इज टाइम to cross always find out by using this formula, L1 plus L2 divided by, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आएगा माय डियर फ्रेंड, दैट इज S1 अपॉन S2। रिलेटिव स्पीड हमने प्लस क्यों लिया है? बिकॉज बोथ आर मूविंग इन विच डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन। नाउ व्हाट इज द टाइम हियर? दैट इज 8। व्हाट इज L1 प्लस L2? ये भी 150 है, ये भी 150 है, तो कैलकुलेशन रिड्यूस करने की कोशिश करो तो ये 300 हो जाएगा। S1 और S2 में से आपको S1 पता है, दैट इज 10 प्लस S2। So let us solve this. Let us solve this. Okay, तो ये इधर आ जाएगा, so this will be 80 plus 8S2, that is equal to 300. Okay, इधर माइनस अगर हो गया, so this is 80. Okay, fine. That is L1 of the same length, 150. Okay, so at S2 will be equal to 220. 220। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अभी, S2 का वैल्यू क्या आ जाएगा फिर? दैट इज 220 अपॉन 8 मीटर पर सेकेंड। बट हमें सभी ऑप्शंस किलोमीटर पर आवर्स में दिए हुए हैं, सो 220 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 18 बाय 5 से कर लो। ओके, तो क्या हो जाएगा? अगर 4 से डिवाइड करते हो तो 4 टू जा 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, ये 5 से कट करेगा, 11 पे कट करेगा, और ये 9 पे कट करेगा, सो 11 9 जा व्हाट? 99 किलोमीटर पर आवर। सो इज इट गिवन? यस, इट इज गिवन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आपको समझ में आया? हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? Yes, sir. और अगर Yes. मैं अगर क्लैरिटी अगर लाना चाहता हूँ तो फिर से मैं निकाल लेता हूँ। देखो हमने S1 निकाल लिया, पहले ट्रेन का स्पीड निकाल लिया हमने 150 डिवाइडेड बाय 50, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 10 मीटर पर सेकेंड। अभी ये ट्रेन ये 10 मीटर पर सेकेंड जो L1 था उसका, ये दूसरे L2 को क्रॉस कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है। ओके, इसका स्पीड हमें पता था 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका स्पीड हमें पता नहीं है, दैट वी हैव टू फाइंड। इन दोनों का लेंथ, इसका लेंथ 150 मीटर है तो इसका भी लेंथ 150 मीटर है, बिकॉज यहाँ पे बोला हुआ है सेम लेंथ एंड बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। टाइम इज गिवन एज 8 seconds, so we know that when both trains are moving in opposite direction the time will be equal to L1 plus L2 divided by S1 plus S2। इसमें अगर वैल्यूज पुट अप करते हैं हम, T दिया हुआ है 8, L1 and L2 both are same, so that is equal to 300 divided by 10 plus S2 को हम मान लेते हैं X, so this will be equal to 80। ये मल्टीप्लाई करेगा इसको, 80 plus 8X that is equal to 300, so therefore 8X is equal to 220 मिल गया है मुझे। पूरा सिंप्लीफाई नहीं करता है तो उसको रहने दो, पूरा आगे जाके सिंप्लीफाई होगा। दिस विल बी इन मीटर पर सेकेंड, but all options are given in kilometers per hour. What is your X? X is nothing but your S2, that is 220 divided by 8 multiplied by 18 by 5, because to मीटर पर सेकंड का किलोमीटर्स पर आवर में कन्वर्जन करने के लिए 18 बाय 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और ये फाइनल सिंप्लीफिकेशन आपका 99 किलोमीटर्स पर आवर आएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन माय डियर्स। ओके, लेट अस ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। और सभी ने क्वेश्चंस को
थोड़ा सा गौर से देखना है। एंड डेफिनेटली अगर कंसेप्ट थोड़े से डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस अगर हम करते तो उससे कम डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन करने में और आसानी हमें महसूस होती है। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, अ ट्रेन पासेज एन इलेक्ट्रिक पोल। तो ये सबसे बड़ा कीवर्ड है, देखो इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस कर रही है इन हाउ मेनी सेकेंड्स, 20 seconds, एंड passes a platform of 240 meter long in 45 seconds, then find the length of a train। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। नाउ टेल मी द what will be the speed of a train when it is passing electric pole, that is L upon T, L upon time, and what is the speed of the same train when passing platform, that is L1 plus L2 divided by time? Yes or no? This is the case when train is passing platform. This is the case when train is passing platform. ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तब का ये स्पीड है। This is the speed when train is passing pole, but both speeds are same. So if both speeds are same, I can say that L upon time, L upon time. So L1 लिख लो इसको, length of a train, वही length है। And L1 plus L2 upon यहाँ पे भी टाइम, तो ये आपका टाइम 1 होगा, ये आपका टाइम 2 होगा। चलो L1 पता नहीं है, टाइम कितना था पहले 20 इज इक्वल टू L1 पता नहीं, बट प्लेटफॉर्म का लेंथ पता है, दैट इज 250। कितने मिनट्स में क्रॉस कर रहा है ये, दैट इज इन 45, दैट इज इन 40। सॉल्व दिस इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन सॉल्व करते तो आपको डेफिनेटली आंसर वहां पे मिल जाएगा। ओके, अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा आपको, 45L1 इज इक्वल टू 20L1 प्लस 250 मल्टीप्लाइड बाय 20, क्योंकि ये 20 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। इसको इधर लेके आओ तो क्या मिल जाएगा आपको, 25L1 दैट इज इक्वल टू 500। अच्छा 5000 हो गया, that is equal to 5000, so L1 is equal to, sorry, L2, L1 that is 5000 divided by 25। so अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो 200 meters आपका आंसर आना चाहिए। length of train is 200 meters। again this is a very good question। Guru and Tanvi, have you understood this? Yes, Yes, sir. sir. okay, वेरी गुड, दोनों का आंसर भी आ गया था, क्या बात है, वेरी गुड। Now let us try to solve this question now। I'm just removing this। Okay, come on everyone, I'm giving you some time to solve this question। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, तो वो कैटेगरी में ये क्वेश्चन तो बहुत इजी हो जाएगा। yes, we already solved the question like this। Sir, we already 20 solved this. meter long train is crossing the प्लेटफॉर्म टेलीग्राफिक पोस्ट इन 6 minutes, तो उसका स्पीड हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू 120 अपॉन 6, दैट विल बी मीटर पर सेकेंड। 120 by 6 that is equal to 20 मीटर पर सेकेंड। और कुछ चीजें आपको अगर अच्छी तरह से पता है तो ये 5 का फोर्थ मल्टीपल है, तो 18 का फोर्थ मल्टीपल दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। दैट विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी गुड, बोथ ऑफ यू गॉट इट करेक्ट। नाउ let us go for the next question। take your time, ये थोड़ा सा चेंज यहाँ पे जरूर है क्वेश्चन में, आपको टाइम पूछा है। Okay, very good, Guru। Now, see, a train passes a station 150 meter long। Now, station का length पता है आपको, 150 meter long। That means length of a platform, you know।
in 60 seconds at a speed of what, 72 kilometer per hour. How much time it will take to pass an electric pole? तो पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? From this given information you have to find the length of a train. देखो, length of train, ये फॉर्मूला यूज होगा, L1 plus L2 that is equal to speed into time. Speed into time. ओके, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से फॉर्मूला लो. L1 that is length of train we don't know. So what is the length of a station? That is 120. This is equal to at what speed that train is passing that station, 72 किलोमीटर पर आवर. बट इसको हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज ऑल यूनिट्स आर इन मीटर एंड सेकेंड. इन हाउ मच टाइम? 60. ओके, चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसको. 18 1s are 18, 18 4s are 72, 5 4s are 20, 20 into 60 that is equal to 1200. So L1 plus 120 that is equal to 1200. अब ये 1200 अदर साइड ऑफ इक्वेशन जाते वक्त माइनस हो जाएगा. So L1 is equal to 1200 minus 120. This will be equal to 1080. That is in meter. So this is the length of a train. Yes or no? This is the length of train. This is the length of train. Now अभी हमें क्या पूछा है? How much time it will require to cross electric pole? इलेक्ट्रिक पोल के लिए क्या निकलता है? टाइम कैसे निकालते हैं? That is L upon speed. That is L upon speed. What is the L you found here? 1080 divided by 72 kilometers per hour is nothing but 20 meter per second. अभी अभी हमने देखा था. Yes. So whatever the time we will get in seconds, so 0 0 cancel हो जाएगा. 108 divided by 2 that is equal to 54 seconds. So that train will cross the electric pole in 54 seconds. That is your answer, option C. I hope Tanvi and Guru you got this. थोड़ा सा हम जैसे जैसे Yes, आगे जा रहे हैं थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल में बढ़ा रहा हूँ, लेकिन कंसेप्ट चेंज नहीं हो रहे बेटा. कंसेप्ट वही है. यहाँ पे पहले स्टेशन को क्रॉस कर रहा था, एक पार्ट मिसिंग था, L1 दैट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन वी डोंट नो. सो पहला काम हमने किया, लेंथ ऑफ ट्रेन निकाल लिया, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस कर रही है तो उस वक्त हमें लेंथ ऑफ ट्रेन की जरूरत डेफिनेटली पड़ती है, तो हमने वो निकाला. ओके, चलो नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, रीड दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर नहीं आता है तो आई विल हेल्प यू आउट. A train passes a platform in 40 seconds and woman standing on a platform in 30 seconds. If the speed of train is 108 kilometers per hour, what is the length of platform? What is the length of platform? This is a very good question. तो दो तरीके से आपको सोचना पड़ेगा. दो तरीके से आपको सोचना पड़ेगा. नाउ ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड्स में क्रॉस कर रही है? 40 सेकंड्स में. सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ ट्रेन व्हेन क्रॉसिंग प्लेटफॉर्म? दैट इज L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय टाइम. ओके, ना आपको लेंथ दिया है, ना आपको प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया है. ट्रेन का भी लेंथ पता नहीं, प्लेटफॉर्म का लेंथ पता नहीं, बट टाइम पता है, तो इतना आप लिख सकते हो. ओके, नाउ स्पीड तो वही है, मैं SC लिख रहा हूं, स्पीड तो वही है, लेकिन जो वुमन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, सो वुमन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म के वक्त आपका स्पीड क्या हो जाएगा? L अपॉन टाइम. L upon time. Now what is the speed given? That is 108. So how you can find the L? L will be equal to speed into time. Speed into time. What is the length of platform? पूछा, speed into time. चलो निकाल लो. स्पीड 108 है, किलोमीटर पर आवर में दिया है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो. टाइम दिया हुआ है आपको, वुमन को क्रॉस करने का टाइम 30 सेकेंड्स दिया है. सिंप्लीफाई करो. मैंने 2 दिन पहले बताया था आपको, अगर आपको 18 का टेबल अच्छी तरह से पता है तो और काम आसान हो जाएगा. 18 6 are 108, 6 5 are 30, 30 into 30 that is equal to 900. 900 meters is the length of a train. This is the length of a train. This is not a length of platform. This is length of train. और आपको पूछा है लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म. तो देखो अभी यहाँ पे क्या होगा,
S, you know, see L1 plus L2 is equal to S into 40, और आपका S कितना है, that is 30 किलोमीटर, 108 किलोमीटर पर आवर इज नथिंग बट 30 मीटर पर सेकेंड इंटू 40, और इनमें से आपको 900 L1 पता है, तो निकाल लो, दिस इज व्हाट 1200, so L2 is equal to 1200 minus 900, that is equal to 300 meters, and this will be the length of platform. This will be the length of platform. I hope you understood this. Tanvi, Guru, Rishabh, Madhur, I hope you understood this. So Tanvi, answer is option B. Yes or no? Yes, sir. Guru? Yes, sir. Okay. तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल डेफिनेटली बढ़ रहा है। तो देखो हमने क्या किया। ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस वन मोर टाइम। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर, ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही थी 40 सेकेंड्स में, और वही ट्रेन वुमन को क्रॉस कर रही है इन 30 सेकेंड्स एट द स्पीड ऑफ व्हाट 108। सो फ्रॉम दिस वी कैन गेट द लेंथ ऑफ अ ट्रेन। सो लेंथ ऑफ ट्रेन यहाँ पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, बिकॉज वुमन विल बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, वुमन को जब क्रॉस करेगी तो लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सो स्पीड यहाँ पे था 108, जिसको हमने 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, तो आपको यहाँ पे 900 मीटर्स ये लेंथ ऑफ ट्रेन मिल गया। दूसरे केस में प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते वक्त उसका स्पीड क्या हो जाएगा, दिस विल बी अगेन 108 इंटू 5/18 मल्टीप्लाइड बाय 40 सेकेंड्स आएगा, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म को 40 सेकेंड्स में क्रॉस कर रहा है। So you know this L1, that is length of train, plus L2. So you simplify this. This will simplify on 30 multiplied by 40. 30 multiplied by 40 is 1200. So L2 will be equal to this 900 will be subtracted from 1200. So your answer will be 300 meter. That is the length of a platform. तो सभी क्वेश्चंस में देखो कंसेप्ट बार बार रिपीट हो रहे, रिवीजन हो रहा है, कंसेप्ट का रिवीजन हो रहा है, concepts are getting revised. Okay, let us solve this question quickly now. 240-meter long train crosses a platform in 45 seconds while it passes a single board in 16 seconds. What is the length of a platform? किया था हमने, इस तरह का क्वेश्चन किया था। Now speed while crossing the platform is same as speed while crossing a single board, signal board दोनों स्पीड सेम है। अभी प्लेटफॉर्म को जो क्रॉस करेगी तो स्पीड हमारा कैसे निकलता है, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय टाइम, और ये टाइम अलग होगा। एंड सिग्नल बोर्ड को जब क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस आपका लेंथ ऑफ ट्रेन इतना ही होता है, और यहाँ पे टाइम आपका दूसरा होगा, टाइम 2 होगा। नाउ जस्ट पुट अप द वैल्यूज हियर। लेंथ ऑफ ट्रेन इज 240, 240 प्लस वी डोंट नो द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेट अस कंसीडर दैट एज x। प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड्स में क्रॉस कर रही है, दैट इज 45। This is equal to L2 is again 240, and then what is the time here, that is 16. Now solve this equation for x, definitely you will get the answer, definitely you will get the answer. Cross multiply करके क्या मिलेगा my dear friends, 240 multiplied by 16 plus 16x is equal to 240 multiplied by 45. तो 16x is equal to 240 multiplied by 45. Don't waste your time for multiplying this. ये मल्टीप्लाई करने के लिए टाइम वेस्ट मत करो, 240 कॉमन निकाल लो, सो दिस विल बी 45 माइनस 16, ये 16x इज इक्वल टू, सो x इज इक्वल टू 240 मल्टीप्लाइड बाय, ये सब्ट्रैक्शन कितना होगा, दिस विल बी 29, यस दिस विल बी 29, 29 या 39, ये 29 होगा, 29 डिवाइडेड बाय 16। चलो सिंप्लीफाई करो, 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, 16 5 जा, अगर आप 19 और इसका मल्टीप्लिकेशन करते हो तो यूनिट प्लेस शुड बी 5, सो 15 9 जा 135 कैरी 13, 15 2 जा 30, 30 प्लस 13 दैट इज 43, so your answer will be 435 meters, 435 meters. तन्वी, मधुर, ऋषभ, गुरु, आपको समझ में आया ये कैलकुलेशन मैंने अवॉइड कैसे किया, तो हैव यू अंडरस्टूड दिस? Yes. Okay, now let us try to solve the next question. अभी देखो यहाँ पे situations मैंने कैसे लिए हुए हैं, these are the situations where the trains are moving in opposite direction and
same direction. Now two trains, ये एक ट्रेन है जिसका लेंथ है 400 meters और दूसरा है 350 meters, running on the parallel trains at a speed of 19 and 34 kilometer per hour. In which direction they are running? They are running in the same direction. हमें टाइम पूछा है, तो टाइम पूछा है तो पहले इन दोनों का एडिशन कर लो, लेंथ का एडिशन कर लो, से 400 प्लस 350 एंड सेम डायरेक्शन जा रहा है, तो क्या करोगे? स्पीड का सब्ट्रैक्शन करोगे या एडिशन करोगे? बोलो। सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्शन होता है माय डियर फ्रेंड। हाँ, एंड दिस इज किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस विल बी 750 डिवाइडेड बाय, सो व्हाट इज दिस सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन विल बी 20, अगर सब्ट्रैक्ट, दिस इज 25, सो 25 मल्टीप्लाइड बाय 5/18, तो ये हो गया, दिस विल कैंसल इज ऑन 30, ये इसको 6 पे काटेगा, ये ऊपर अगर जाता है तो 18 6 जा, ये 30 पे कट करेगा। लेट मी चेक वन मोर टाइम, टाइम इज इक्वल टू 400 प्लस 350 डिवाइडेड बाय, दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा 34 माइनस 19, एंड बोथ आर गिवन इन किलोमीटर पर आवर, सो इनको मीटर पर सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दो। सो दिस विल बी 750 डिवाइडेड बाय, this will be 15 only, 15 multiplied by 5/18, so ये 75 cancel होगा, ये 10 पे कट हो जाएगा, so your answer will be 180 seconds, which is option D, which is option D. Understood, Guru, Tanvi? Yes, sir. Yes, sir. So next question देखो, this next question says that train 165 meter and 135 meter running at a speed of 70 and 38 respectively in opposite direction. फिर से हमें टाइम पूछा है, सो टाइम पूछा है तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो स्पीड का क्या होगा माय डियर फ्रेंड? बताओ, स्पीड का क्या होगा? एडिशन होगा। एंड व्हाट इज द एडिशन ऑफ दिस? 165 प्लस 135 divided by 70 plus 38, दो बोथ आर इन किलोमीटर्स पर आवर, तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, इनका एडिशन हो गया 300, this is equal to 108 into 5/18, 18 ones are 18, 18 6 are, तो ये इफेक्टिवली होगा 300 upon 30, 300 upon 30 is nothing but 10 seconds, so they will cross each other in 10 seconds. I hope you understood this particular topic. Okay, chalo, thank you very Yes, much sir. for listening me very patiently and politely. Bye bye, happy learning and good night. Bye, sir.